everyone, welcome back to my channel. My name is Simran Pradhan. First of all, thank you so much for giving me such a great response in my first video and giving your blessings and wishes to me. Thank you so much for that, and thank you so much for taking part in my giveaway as well. But giveaway के winners का नाम सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा because winners लास्ट में अनाउंस होने वाले हैं. Yes. So let's start today's video. Today I am having a very nice topic, a very interesting topic, which is very famous in the market nowadays. Especially during the lockdown, it got more famous. Do you know what it is? Well, it is none other than coding. Yes, कोडिंग आजकल बहुत फैला हुआ है, काफ़ी बच्चे कोडिंग कर रहे हैं. बट क्या आपको पता है कोडिंग क्या होता है और कौन उसे सीख सकता है? मैं आपको बताऊंगी क्या होता है कोडिंग. सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो कोडिंग एक लैंग्वेज है. जैसे हम ह्यूमंस आपस में बात करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, चाइनीज़, अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वैसे ही अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी होती है तो हम कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं. अब कोडिंग लैंग्वेजेस काफ़ी सारी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, C++, गो, स्विफ्ट और भी बहुत सारी है. हर लैंग्वेज का अलग अलग यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, few languages are used for game development, few can be used for app development, few can be used for website development, for software development and many more things. So I am going to teach you coding online. Yes, मैं आपको ऑनलाइन फ्री में कोडिंग सिखाने वाली हूँ. आपको करना होगा सिर्फ एक काम, मेरे वीडियोस रेगुलरली देखने होंगे और आप भी सीख सकते हो कोडिंग. Even if you are a child or adult and if you wish to learn coding, you can. Believe me, it's very interesting and very easy. तो कोडिंग सुन के, अच्छे और बड़े बड़े नाम सुन के लैंग्वेजेस के, C++, जावा, हमें लगता है कि कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बिलीव मी, इट इज़ नॉट. I am going to start with JavaScript, with the very basics and the game development. Yes. So first हम गेम डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड देन धीरे धीरे ऐप डेवलपमेंट में भी जाएंगे. सो आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. सो मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे कोडिंग सीखेंगे और कैसे आप अपना अकाउंट उस पर बना सकते हो. Okay, so now you can see my laptop screen on your screen. So what you have to do is you have to go to any browser. You can use any browser that you have in your laptop or your desktop. Okay, I'm using Google Chrome and you have to just type code.org, code.org. Okay, and now you don't have to click on any of these links, just click enter and you will come to this website code.org. Okay, this is the platform where we are going to learn coding. Okay, you can also try this in your mobile phone, but it is not recommended to use this website on your mobiles because it doesn't gives you a very nice learning experience. So I would recommend you, if you have a laptop or a desktop, you can use this website and you can have a wonderful learning experience. सो ये वेबसाइट जो है, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस साइन इन बटन जो यहाँ टॉप राइट साइड पे आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हो, बट आई विल नॉट रेकमेंड दिस. अगर आप खुद साइन इन कर रहे हो सो यू कर सकते हो, बट देन जितनी भी बार आप यहाँ पे आओगे अलग अलग गेम्स या एप्स बनाने के लिए, आपको वही अकाउंट यूज करना होगा जहाँ आपकी सारी प्रोजेक्ट्स सेव होंगे. ओके, सो बच्चों के लिए मैं खास सजेस्ट करूंगी कि हम ईमेल आईडी और पासवर्ड उनको बार बार नहीं देना रिकमेंड करेंगे. तो आप क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पे फ्री में अकाउंट बना सकते हो. तो अभी मैं आपको बना के बताऊंगी. When you click on create account, this is what gets open. Here you have to type your email ID and you have to make a new password. Okay, so one time हमें email ID यहाँ टाइप करनी होती है. So मैंने अपनी email ID टाइप करी. अब मैं कोई नॉर्मल सा पासवर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो and you click on sign up.
अब साइन अप करने के बाद वो आपसे आपकी थोड़ी सी और डिटेल मांगेगा, जैसे कि अकाउंट टाइप। सो हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, ओके, बिकॉज हम लर्न कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, ओके। देन यहाँ पे ये आपको टिक करना होगा, आई एम अ पेरेंट और गार्डियन साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ माई चाइल्ड, ओके। ये नेसेसरी है बिकॉज आप अपना अकाउंट बना के आपके बच्चों को दे सकते हो ताकि वो लर्न कर सके, ओके। दिस इज ऑप्शनल if you want emails from this website or no. So I'm clicking no, okay. So parent का email ID we have already given. So display name you can यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो, okay, student का या learner का. Your age आप अपनी select कर सकते हो, okay. Gender female, okay, and then you click on go to my account, okay, yes. तो यहाँ पे हमने अकाउंट बना लिया है अपना, and now you can start creating apps and interesting games, okay. यहाँ पे आप अपना नाम देख पाओगे, दैट मीन्स यू हैव साइंड इन एंड यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब हमें जब गेम बनाना शुरू करना है तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ओके। तो जब मैं क्रिएट पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है, ओके। सो लेट मी मूव दिस हियर। तो यहाँ हमारे पास स्प्राइट लैब है, आर्टिस्ट लैब है, गेम लैब है, ऐप लैब है, डांस पार्टी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये प्लेटफॉर्म पे हम गेम डेवलपमेंट अभी सीखने वाले हैं और आगे जाने के बाद हम ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे। तो अभी के लिए हम गेम सीखने वाले हैं, लेकिन गेम लैब में हम नहीं जाएंगे। आप सोच रहे होगे गेम लैब है यानी गेम बनाना सीखेंगे, बट ये बहुत एडवांस लेवल का गेम लैब है, बहुत आगे हम सीखेंगे इसको भी। बट फिलहाल हम स्प्राइट लैब सीखने वाले हैं। सो आप स्प्राइट लैब पे क्लिक करोगे। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू लर्न फॉर मेकिंग स्मॉल गेम्स, ओके। अगेन लेट मी शिफ्ट दिस, ओके। सो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, ओके। सो लेट मी शो यू व्हाट दिस इज एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये हमारा प्ले एरिया है, यानी कि डिस्प्ले एरिया आप बोल सकते हो। तो यहाँ हम जो भी गेम्स बनाएंगे, जो भी स्टोरीज बनाएंगे, वो हमें इस एरिया में दिखने वाली है, ओके। ये जो है ग्रे कलर का एरिया, ये हमारा टूल बॉक्स है, यानी कि यहाँ से हम अलग अलग कोडिंग के कमांड या कोडिंग करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम कंप्यूटर को देने वाले हैं, ओके। और ये वाला जो वाइट कलर का एरिया है, ये वर्क प्लेस है, ओके। यानी कि यहाँ पे हम कोडिंग करने वाले हैं और अपने कमांड कंप्यूटर को देने वाले हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं, तो बेसिक जावा स्क्रिप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू में हम लर्न करने वाले हैं ब्लॉकली लैंग्वेज, ओके। ब्लॉकली लैंग्वेज यानी कि ब्लॉक कमांड्स की लैंग्वेज, ओके। तो ब्लॉक कमांड्स में क्या होता है, हमारे पास कमांड ऑलरेडी बने हुए होते हैं और हमें वो होल्ड करके कंप्यूटर को देना होता है, ओके। ड्रैग एंड ड्रॉप है, you drag a command, you drop it and you make your code, okay। तो हम बिल्कुल ही डीप वाला जो कोडिंग होता है अभी उसमें नहीं जाने वाले हैं। We are going to start with very easy, very basic block commands, and then we will go to text coding where you just type and do all the coding by typing, okay। So we are going to start with block commands, blockly language in JavaScript. सो यहाँ पे ये जो कमांड है ये मैं डिलीट करूंगी अभी, ओके। एंड दिस इज द प्ले एरिया, ये चला गया यहाँ से, ओके। एंड ये जो 3 डॉट्स आप देख पा रहे हैं ग्रे कलर के, इसको क्लिक करके हम अपने प्ले एरिया को बड़ा कर सकते हैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम यहाँ पे एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेट करेंगे। और आज क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन किया, हमने अकाउंट बनाना सीखा, तो हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। आज हम एक छोटी सी स्टोरी बताएंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम गेम प्रॉपर एक बनाना सीखेंगे, कि आज मैं एक छोटी सी स्टोरी सिर्फ आप सबको बनाना बताऊंगी। सो जस्ट यू गेट टू नो द एनवायरनमेंट एंड जस्ट टू नो द वेबसाइट, ओके। सो बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम वर्ल्ड पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला कमांड लेंगे सेट बैकग्राउंड टू, ये मैंने ले लिया, ड्रैग किया एंड यहाँ पे
when run के नीचे connect किया. Okay, as soon as you connect you get a tuck sound. See again, the tuck sound जो है वो हमें पता चलता है कि हमारा block connect हो चुका है. Okay, as soon as I connect you can see the background here. This is a background of a cave, okay, which is default. So I don't want a cave background, so I'm gonna click on this image, and you already have few backgrounds over here. If you don't like this you can click on more button, and there are a lot of interesting backgrounds already here inbuilt. Okay, so for now I'm gonna take a background of this. Okay, so I click on plus sign and then I click on done. Okay, so as soon as I click on done, see my background is not changed, but I need to click on this background image again, and that background came here on the first position. So now I can select this, and yes, now my background is set. Okay, अब background set हो चुका है. अब हम जाएंगे characters की तरफ. अब मैं चाहती हूँ कि मेरी story में कुछ characters आए. तो characters को हम coding की language में sprite कहते हैं. ओके, स्प्राइट यानी कि कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो अगर एक से ज्यादा है तो हम स्प्राइट्स बोलेंगे. ओके, तो टूल बॉक्स के अंदर हम स्प्राइट्स पे क्लिक करेंगे और हमें नया स्प्राइट बनाना है यानी कि नया कैरेक्टर ऐड करना है, तो हम फर्स्ट कमांड लेंगे, मेक न्यू स्प्राइट ऐड. सो आई एम गोना होल्ड दिस कमांड and connect it below the background command. As soon as I connect this, the character is here in my story. See, so the default character is the bunny, the rabbit, but you can change it by clicking on the image of the bunny. Okay, here जैसे ही आपने image पे click किया, यहाँ आपको काफी सारे characters मिल जाते हैं. आप इनमें से कोई भी character अपने story के लिए ले सकते हो. Okay, या फिर आप और characters अगर देखना चाहो तो costume पे click कर सकते हो, costumes, और यहाँ पे आप न्यू कॉस्ट्यूम क्रिएट कर सकते हो. ये सारे वही कैरेक्टर्स है जो हमें वहाँ ऑप्शन में थे, लेकिन हमें और कैरेक्टर्स अगर देखने हैं तो आप न्यू कॉस्ट्यूम पे क्लिक करोगे. दिस इज द एनिमेशन लाइब्रेरी. ओके, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे कैरेक्टर्स है, काफी सारे ऑप्शंस है जहाँ से हम चूज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, फूड, म्यूजिक, पीपल, then video games, vehicles, lots of options are there to choose from. Now I'm gonna take an animal. So when I click on animals, there are lots of animals from where you can choose. You remember the Three Little Pig story? You can even make that story. So right now I'm just gonna choose maybe a dog or a cat. So let me just take a small cat. So yes, here is my cat. And maybe I can add a butterfly. So I'm gonna select all the characters that I want. So 1, 2, and I can also take a bird. So let's take this sparrow. Okay, so I'm gonna select 3 characters and click on done. Okay. So once I click done, they are here. All my characters are here. Now I'm gonna go back to the coding part. So here there's an option of code. I'm gonna click on this and we come back to coding. We were here on the costumes, we added few characters, and now we are coming back to code. Okay, now also my characters are not uploaded here. You have to change the character once again. Click on the bunny image and see the new characters that you selected are here on the first, second, and third position. Okay, so I'm gonna select cat. Now it's here, but the cat is flying in the air, it seems. I need to keep it down somewhere around here. Okay, so for that, you can see there's a yellow color command here attached to this red one. So here there is a small square. Okay, the yellow color square. I'm gonna click on this square, and now I can scroll my cursor anywhere on the screen and keep this cat. See, the cat is moving with my cursor. So if I like this place, I'm just gonna click it once, left click, and the cat is there on that position.
Now I can set the size of my character. What is the size that I like? I want my character to be big or small. I can decide that. So to change any element in the character, you have to go to sprites again, and you have to take set size command. Set sprite size. Okay. So don't get confused. There are two similar commands here, set size and change size. We are not going to use change size. What is this? How we can use this? We are going to learn this in the later tutorial videos, in the later classes. But for now, we are going to learn about set size. Yes, I take this, I connect it. Now I need to change the image of the bunny to my character. I want to change the size of cat. See, the cat already became small. So these sizes are set in pixels. What is pixels? We are going to learn about this again in the later tutorial videos. But now you can understand, bigger the number, bigger the size. So you can try 100, or maybe you can try 150. See, your character is becoming bigger and bigger. So I think 150 is too big. So I'm going to keep it as 100. This looks good for me. So now I want my character to do something. Okay. I don't want the cat just to sit there. I want my cat to do something. So for that, I am going to give the cat a behavior. Okay. Something that she's doing again and again. Okay. So that's called a behavior. So I'm going to click on behaviors, and from behavior option, I'm going to take the first command, sprite begins. Okay. So I connect this command, sprite begins. When we are giving a behavior to a character, that means my character starts to do something. Okay. My character begins a behavior, starts a behavior. So that's what this command means. Sprite cat begins a behavior. Now, which behavior is this? Let's decide that. So again, we are going to go to behaviors, and when you scroll down here, you have different behaviors in these green color command. Right now I'm going to take swimming left and right. Don't worry, the cat is not going to swim. It's just a name of a behavior. Let's see what happens now. Okay, so to check this game, to check it, you need to click on run. Okay, then only you'll be able to see what are the behavior that you are giving to a character. Okay, so as soon as I click run, see what happens. So my cat started to go right, left, right, left. This is nothing but swimming left and right, left and right. Okay, so this is the behavior that I have given to my cat. Now I will click on reset button, and now I'm gonna add few more characters. I'm gonna go to sprite again, and I'm gonna take the first command, make new sprite, and I'm going to add a butterfly. Again, my butterfly is too big for this story, for this image, so I'm gonna change the size of my butterfly. I'm gonna go to sprites, take set size. I'm gonna select the character of butterfly, and see, she already became small. I think 50 is good for this butterfly. So I'm gonna keep the size of the butterfly 50 and change the location. Right here, then you can select where do you want your butterfly. So I'm gonna keep my butterfly right here. Okay. Now I'm going to give a behavior to my butterfly again. Okay, so I'm gonna go to behaviors, take sprite begins, okay, connect it, select the butterfly, and now I want my butterfly to fly. Okay, I want it to fly all over the area wherever she can fly. Okay, so I'm gonna go to behavior, and scrolling down in the end, I have a behavior of wandering. I'm gonna take this because I want my butterfly to fly, to wander all around the area. Okay, so let's check it, let's run it. See, the butterfly is moving anywhere on the screen. She's not going out of the screen, but she's inside the screen, and she's just flying in the air. All right, now I'm gonna add another character. So I'm gonna reset, and I'm gonna add a bird. So make new sprite, select the bird, and then I'm gonna set the size of the bird again. Okay, so set size of this sparrow, and this time I'm gonna keep the size of the sparrow a little bigger than the butterfly. So maybe 70 or maybe 80. 80 looks good to me. Now I'm gonna choose the location. Maybe sparrow can stay here. Okay. Now again, I'm gonna give another behavior to the sparrow as well.
So I go to behaviors, I take sprite begins, I select my sparrow, and I go to behaviors. And this time I'm gonna take moving east and looping, which is right here. Moving east and looping. Okay, so I'm gonna keep the bird in the air. Okay, like here. Okay, yeah. So I have changed the location, I've kept the bird up. Okay, let's see what happens. See? So moving east and looping means my bird will go in the right side and come back from the left side again. So it is in the loop. It's repeating that again and again. So that means moving east and looping. Okay. So now all my three characters are happy and flying in the air. Butterfly, the cat is moving right and left, and my bird is flying. Okay, so now at this point you can also add a sound to make it, feel very real and effective story. Okay, so what we are going to do is we are going to go to world, and there's a command of play sound. So this command we are going to take, we are going to attach it in the end. And now you can click on the choose button. Once again, you have to click on the choose button. And this is the sound library. You have a lot of interesting sound already in here. For now, I'm going to go to nature. Inside nature, again, I have a lot of sounds to select from. Okay, so you can click on this round black button to hear them out first. See. Okay, so this is a forest sound. So I like this sound. I'm gonna take this sound. Okay. So as you can see, the sound is already selected in the gray color. It's highlighted. So this is selected. I'm gonna click on choose. Okay. So I choose this sound. It is selected over here. Now you can see the sound category is nature, and the sound name is forest woodland loop. Okay. So this is the name of my sound. It is selected. Okay, now we can play the story and we can see how the effect comes with the sound. So I run it and you can see it. Okay, so the sound is also coming, the characters are moving. It looks like we are really over there. Okay. So now I'm going to show you how you can share this story with your friends and families and relatives. Okay, so for that, first we are going to give a nice name to this story. Okay, we click on rename, and here you can type the name, any name that you like. So I'm gonna just type a sunny day, a sunny day. Okay. So yes, and I'm gonna click on save button. Okay, I'm going to click on share button now. Here I have a share button, and this is a link uh, that this website have generated for my game. Okay, so this is the link of the game which you can share it with everybody. Okay, and just copy this link. What you have to do is click on the link one time, right click and copy. Okay, copy the link, and then maybe you can send it to you by your email, or if you use WhatsApp web, you can take the link on your WhatsApp and you can share it with your friends, families and relatives and everyone. Okay, so this was it for today. In the next class, I will complete the story and I will show you how you can add a very interesting element more in this. I will also show you to make one very interesting game and completing the story. Okay, so for today, I'm gonna stop here as it's already a very long video so far. I hope you like this video, and don't forget to watch all the videos which are coming ahead. कोडिंग ट्यूटोरियल्स बहुत सारे आगे आने वाले हैं और हम कंटिन्यू करेंगे कोडिंग सीखने की ये जर्नी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वीडियोस नहीं आएंगे. ऐसा नहीं है. कोडिंग वीडियोस भी आएंगे और दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस, फन वीडियोस, जैसा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था
कुकिंग वीडियोस, स्टोरीज़ या फिर कॉन्सेप्ट चैलेंजेस, बहुत कुछ है, वो सब भी आएगा. सिर्फ कोडिंग वीडियोस नहीं आएंगे, दोनों ही आएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. कीप वॉचिंग वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी कोडिंग सीख पाएँ. ओके, विथ ऑल द अडल्ट्स एंड फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, सबके साथ ये वीडियो शेयर करो so everybody can learn to code free online. Okay, so I hope you like my video, and if you did, please like the video. और अगर आप कुछ स्टोरी बना रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग बनाए हो आपने, तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे लिंक भेजो, मैं आपको फीडबैक दूंगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, any question, please comment and do ask me. I will reply to it and I will try to solve all your queries. Okay, so now it's finally time to hear those 3 winners who won the gift hampers of my first giveaway, my channel's first giveaway. And the 3 winners are Hina Dedani, Tanvi Palan and Omkar Pal. Congratulations to all of you. You won this amazing gift hamper from my side. It is also decorated by me, and inside this amazing gift hamper you also win this mask which is having my logo printed on it. So you also get this, because even if we have taken 2 vaccinations, but still we have to take some precautions which is guided from the government of India. So I just want you all to stay safe, stay happy and healthy. So yes, you also get this mask. So yes, I want you all to please send me your address and contact number so I can connect with you to give you this amazing hamper. So you can DM me on Instagram or you can comment below if you feel fine. So yes, I just want everyone to stay safe, stay healthy. And also to those who haven't won anything this time, I want to inform you that there are lots of competitions and giveaways which are coming very soon, because I have planned many things for my channel which I'll be executing slowly and step by step. So yes, don't get nervous, do watch my videos to get the updates which is coming very soon, and there are lots of things, believe me. So yes, also I might bring a giveaway in December, not really sure right now, but I might bring something. So for that you have to keep watching, keep supporting and keep liking my videos. Keep sharing with all your friends and family so everyone can take part and everyone can win amazing and exciting gifts. So yes, that's it for today. And if you liked today's video, please do like it, comment it, give me your reviews, give me your feedbacks, and also share it with your friends, family, so everybody can learn coding. And don't forget to subscribe my channel so you get the notification of my next video, which might be a tutorial, which might be a vlog, which might be a challenge or anything. So yes, thank you so much for watching. I'll see you very soon in my next video. Bye bye.